Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. So I welcome each and everyone here and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. So before we start, let me know if my voice is audible. Am I visible to everyone? Am I audible and visible to everyone? Okay, so here as we know that newspaper analysis is very important because it gives you an immense idea about what kind of things that you should prepare on that. And another thing is that majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. So what exactly we discuss in newspaper analysis? News analysis, we discuss about the different aspect of the newspaper. Like we cover the national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, sports, summits and conference, miscellaneous. But apart from that, we also cover the Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament, that is also we discuss. So as we know, that recently that women reservation bill was passed and Bharatiya Nyaya Sanhita bill was passed, Bharatiya Sakshya Adhiniyam was passed. So these are all things that we had discussed earlier as well. So here is the quote is that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is the questions of the day. We will ask you the 5 questions. That question will be important in your exam point of view because unless you will not develop the temperament to solve the MCQs, that would not be fruitful to gathered all the content, because sometimes you have all the information about the particular subject and particular questions, but you are unable to find the you are unable to do the MCQs, right? चलो जी, and here is quick tips. सबसे पहला ये आपको इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, इसमें आपको नेशनल पार्क्स मेंशन की हुई है. टोटल हमारे पास कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में? 106 नेशनल पार्क इन आवर कंट्री. And the largest कौन सा है? Largest national park in our country, that is Hemis. Hemis national park जो है आपका वो कहाँ पे है? The location is in Ladakh, right? सबसे oldest कौन सा है? जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड. ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है. Can anyone tell you which year it was established? और ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, the courtesy is नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है. और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? प्लीज़ कोई बता सकता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? सो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो कहाँ पे है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, दैट वाज इन बिहार. उत्तराखंड में है दुधवा नेशनल पार्क, नागालैंड में इंताकी, मणिपुर में केबू लामचो, लद्दाख में हेमिस आप देख सकते हैं, झारखंड में बेतिया, गोवा में मोलेम, एंड उत्तराखंड में आपके पास जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, राजाजी नेशनल पार्क है, एंड वैली ऑफ फ्लावर्स. दिस ऑल नेशनल पार्क दैट वाज लोकेटेड इन द प्लेस ऑफ उत्तराखंड. हियर वी टॉक अबाउट इफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री, द आंसर वुड बी हेमिस नेशनल पार्क. सो हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका वो सबसे हमारा लार्जेस्ट है, पर ओल्डेस्ट जो है वो आपका वो है जिम कॉर्बेट. सो जिम कॉर्बेट इज अ oldest national park of our country. So total in our country there is 106 national park in our country. सबसे ज़्यादा in which state having maximum number of national parks? So the answer would be मध्य प्रदेश. जो आपका मध्य प्रदेश है MP, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क है. और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपका? हेमिस नेशनल पार्क. हेमिस कहाँ पे? लद्दाख में. So important takeaways that you should remember. In your exam they will ask you about like there is a controversy about the any national park or in the news. जैसे अभी recently news में क्या था? वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व which is located in बिहार. गुजरात में आपका कौन सा है? गिर नेशनल फॉरेस्ट. सो गिर जो है आपका as per the data of wildlife database, national wildlife database, Gir forest is for the tiger or lion. Please let me know.
कोई बता सकता है कहाँ पे है? गिर टाइगर आपका गुजरात में है, एंड वहाँ पे त्रिपुरा में आपको क्लाउडेड लेपर्ड बिसन, ये हमारे नेशनल पार्क है। सिटी फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर। कर्नाटका में अंशी और बांदीपुर दो फेमस है वहाँ पे। एंड अंडमान एंड निकोबार में भी आपके नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश में हैविंग 11 इन नेशनल पार्क, जिसमें कि आपको यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कुनो नेशनल पार्क, जहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। So here that kind of information in our country, if we talk about, the coverage is 1.23% of our land that is covered by the national park. Here we have with the next one, greenwashing. So greenwashing का मतलब होता है जब कोई भी firm or government agency that gives a false impressions that their products or activities are climate friendly or help in reducing emissions, that is known to be a greenwashing. It may also occur when a company highlights sustainable aspects of product to overshadow its environmentally damaging activities. So, जो greenwashing होती है, my friends, so greenwashing can involve, environmental machinery, misleading labels or hiding all the facts. ब्रिटेन में क्या हुआ? जुलाई में ब्रिटेन की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, that is known to be ASA, that identified 3 Google ads that suggested that flight operated by the Air France Lufthansa Etihad that was sustainable. So how polluting are airlines? Currently अगर आप देखें आप तो aviation industry that is responsible for approximately 2.5% of all human produced CO2 emission. So according to the UN Governmental Panel on Climate Change 2020 that estimates this may seem like a modest contribution, but is set to grow very fast. ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट, सॉरी, आर्टिकल 370 दैट इश्यूड क्लोज्ड बट टेरर विक्टिम नीड क्लोजर। यहाँ पे क्या था, इशू क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज गोइंग ऑन? माय फ्रेंड्स, सब द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट द आर्टिकल 370 में एक प्रोविजन था, टेम्पररी प्रोविजन वॉज देयर। सो ये जो आर्टिकल है इसमें मेंशन क्या किया गया है? जजमेंट ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस संजय किशन कौल, जो हमारे जस्टिस हैं, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जस्टिस संजय किशन कौल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया also recommended the constitution of a truth and reconciliation commission to heal the wound and suffering of victims of the insurgency that gripped the Kashmir Valley, particularly in 1989 से 1990 के बीच में। जस्टिस कोल साहब ने लिखी कि इससे क्या हम अचीव कर सकते हैं, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन दैट फॉर द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। So at the same time, he cautioned that the commission, if constituted, should not turn into a criminal court. Defining parameters की बात करें हम, so the purpose of a Truth and Reconciliation Commission is to facilitate the process of reconciliation in societies that are, divided during periods of violence and grave human rights abuse. While if you talk about Uganda, it had a Truth Commission that constitute Uganda One Commission of Inquiry into disappearance of people of Uganda 1974, and in 1974 said to be the world first to investigate and report to on hundreds of disappearances that occurred during the earlier regime. So first क्या फोकस करने चाहिए अपने पास्ट के ऊपर, पास्ट में क्या डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट के, rather than ongoing event. Second, a truth commission that investigate a pattern of events that took place over a period of time, right? और तीसरी चीज जो important, it engaged directly and broadly with the affected population, gathering information on their experiences. And the fourth one, a truth commission is a temporary body, right, with the aim of concluding with the final report. और in the last one, the fifth ये होनी चाहिए, the truth commission जो है is officially authorized or empowered by the state. So जो ट्रूथ कमीशन है that also known as have also been appointed by the United Nations. So यहाँ पे क्या देखनी हमें होगी, सेंटर फॉर ट्रांजिशनल जस्टिस ICT और NGO एस्टैब्लिश होती है यहाँ पे,
तो बेसिकली जो केस ऑफ यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स हैं, जो कि जस्टिस कौल साहब ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन की, मेक श्योर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस हैं, मतलब देयर अराउंड 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सो ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है, अगर ये ठीक से कॉन्स्टिट्यूट होती है इमीडिएटली आफ्टर द चेंज ऑफ regime or end of hostility or insurgency, that would be the most useful in reconciliation and in rebuilding fractured society. Therefore, the Truth or Reconciliation Commission, even if constitute without further delay, that will have only limited utility. And nevertheless, जो victims हैं वहाँ के of जो जिन्होंने उस टाइम में अपने rights that was somehow violated, still reserve the right to reparation recognized even by the UN as well. Now we move to the next one, HFSS food, and this article basically talking about like high fat sugar salt. That was high fat sugar salt. So the consumptions of high fat sugar salt is one of the major risks include obesity, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। सो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 70% ऑफ द ओवरवेट एंड ओबेस पीपल लिव इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। 55% उसमें से क्या है इन द रूरल एरियाज अक्रॉस द ग्लोब, डिस्पेलिंग द परसेप्शन दैट ओवरवेट obesity is only a problem in high income countries in urban and affluent communities. So in short, that we can see that the ultra processed food sector in India that witnessed a compound annual growth rate about 13.4%, that between 2011 and 2021. So as the world largest producer and consumer of sugar in 2020, the country has been an alarming surge in the consumption of HFSS food. About 50 to 60% of the edible sugar, salt and fat produced in India is consumed by the processed food industry. Sales of snacks जो होते हैं, soft drinks जो होते हैं, that tripled over the past decades. This is very, very important. So there is a global trend of utilizing fiscal measures to combat obesity. Taxation is considered to be an effective means to reduce the consumption of these products. So basically, sorry, जो current हमारा GST rates है on ultra processed foods जैसे कि salty snacks, SSP that do not adequately align with the nutritional content. जो tax है यहाँ पे SSP के ऊपर, so वो 28% है GST and 12% compensation cess है. So similarly, juice face a 12% rate irrespective of their fruit and sugar content. Salty snacks are taxed at 12% regardless of their salt content. Such inconsistency that somehow fail to consider the varying nutrition impact of these products and hence show limited impact of their altering consumption basket in favor of healthier alternatives. So जो आपका HFSS है, high fat sugar salt taxation in India, that should not be merely seen as an economic or fiscal policy concern, but it deserves to be considered a public health imperative, right? Here we have, और जितने भी 16 countries हैं, जैसे आपका डेनमार्क हो गया, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. So they issued the junk food law that introduced a gradually increasing levy on the ultra processed food, providing a model for other nation. India में केरला ने भी introduce किया fat tax को, that way back in somewhere 2016 में, which later got subsumed into India's goods and service tax in 2017 because government ने उस time abolish कर दिया सारे taxes को. Fleet electrification to tackle urban pollution. So the air quality index in many Indian cities has entered the red zone several days this year. Millions of people have to face serious health hazard due to the recurring increase in air pollution. It is clear that mitigation strategies have to be prioritized as per two seminal studies pertaining to Delhi urban emission 2015 and Delhi की जो study है, which is called by transport and construction sector. दो जो है major sector आ रहे हैं इसके ऊपर, one is transport and second is construction.
So about 9 lakh new trucks are added to Indian roads every year to already running fleet of 70 lakhs trucks. India carries over 2 trillion ton kilometers freight on trucks annually. These trucks consumes over 1/4 of Indian oil imports and that contribute around 90% of road transport CO2 emission. So यहाँ पे जो व्हीकल से जो निकलती PM 2.5 particle molecules. So India has already electrified rail freight transportation, but that caters to only about 20% of freight carried that in the country. So हमारे इंडिया की जो रोड्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेनिट्रेशन रेट दैट हैज क्रॉस 6% ऑफ मार्क. बट जब बात करें ट्रक्स की, ट्रक्स में इलेक्ट्रिफिकेशन की केसेस बहुत कम है, राइट. सो इन शॉर्ट दैट वी कैन सी दैट जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स है दैट रिमेन्स अ चैलेंज ड्यू टू द अनफ्रंट कॉस्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि सारे प्लेसेस पे मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस होनी चाहिए, like Delhi, Mumbai, Bangalore. So it is commendable that the जो government है that is aggressively electrifying the bus fleet and that sets electrification targets for the bus aggregators. क्योंकि जो 9 lakhs new trucks हैं जो कि अराउंड यहाँ पे 2 trillion ton और मेन 90% ऑफ रोड में जो आपके CO2 इमिशंस होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए इनफ है. मतलब 90% आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो आपके इन ट्रक्स और व्हीकल्स की वजह से होता है. सो ऑब्वियस दैट यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट इन मेनी इंडियन सिटीज दैट हैज एंटर्ड अ रेड जोन दैट इन सेवरल डेज दिस ईयर. एंड ऑब्वियस दैट वी कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज. Million of people that have to face serious health hazards due to the increase in air pollution. So in this era of urgency, where every breath counts, deploying solution swiftly is paramount. And this recent demand of 7,750 e-trucks in India by 2030, if it is materialized, that will result country saving around 800 billion liters of diesel 2050 तक. ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बायो इथेनॉल्स की बात की है, बायो डीजल की भी बात की है. क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टारगेट्स है अराउंड 7,750 ट्रक्स ई ट्रक्स लाने की, राइट. उससे ऑब्वियस ही बात है हमारी डिपेंडेंसी डीजल पे कम होगी एंड उससे हमारा क्या होगा, ऑब्वियस बात है पोल्यूशन लेवल और कम होगा, राइट. सो नेक्स्ट वन देखते हैं हाउस ऑफ लीडर्स. बेसिकली इसमें कपिल सिब्बल साहब हैं, ये सीनियर लॉयर थे और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं. इन्होंने अपनी इस आर्टिकल में क्या चीज़ें मेंशन की है जो हाउस ऑफ लीडर्स हैं, राइट. क्योंकि अभी जो रिसेंटली लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, राइट, दैट नीड्स टू कंडक्ट प्रोसीडिंग फॉर नॉन पार्टीशंस वे. अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पार्लियामेंट में 78 से भी ज़्यादा MPs जो थे दैट फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जिसमें आपके MPs ऑफ राज्यसभा, MP ऑफ लोकसभा, जिनको की क्या किया, डिसमिस किया गया. सो यहाँ पे जो है मई 19, 2014 की बात है जहाँ पे मोदी जी यहाँ पे पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो लीडर्स हैं हाउस के दैट नीड टू राइज अबव पॉलिटिक्स. इट मीन्स दे मस्ट थिंक अबाउट द कंट्रीज प्रॉब्लम्स एंड they need to be discussed, right. So यहाँ पे अगर रियल इशू की अगर बात करें, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, so that affiliated to a political party that represents the house, not the majority party in power. इससे क्या है कि this also holds true of the chairman of the Rajya Sabha in the respective capabilities. जो यहाँ पे प्रेजेंट है विल ऑफ जो रिस्पेक्टिव हाउस के, मतलब जो स्पीकर है somehow वो कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं दोनों हाउस के, कहीं ना कहीं ये जो स्पीकर लोकसभा के हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उस मेजॉरिटी पार्टी के. तो जो आपके अपोजिशन की पार्टी कुछ डिमांड होती है, अकॉर्डिंग टू देयर इन द आई ऑफ व्यू दे कंसीडर दैट इट्स अ कंप्लीटली इलेजिटिमेट, राइट. सो ऑब्वियस यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो राज्यसभा के स्पीकर हैं और चेयरमैन हैं, जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए हाउस में, दैट शुड नॉट नेवर बी कंडक्टेड इन अ मैनर विच suggest that the opposition is being bulldozed and that voice will be muzzled. So obviously बात है यहाँ पे, if you like suppress someone voice in the parliament,
that is not good for the democracy as well. So if the opposition that is to be denied to the right to voice, it's concerned on matters of national interest, right? So obvious, if the opposition is demanded in that manner, so we have seen in the recent past. So the member of opposition here that are suspended, if the proceeding of the committee or privilege committee that conducted in a manner that is contrary for the basic principles of the constitution. And why the opposition party is only suspended? Why not the ruling party? So obvious in that case, it is a matter of history that in the past जो MPs थे of the political party that is on the treasury benches that today ensure the stalling of Lok Sabha and for the entire session. So parliament में for the जो भी discussion होती जो भी आपकी argue होती that is good for the democracy, क्योंकि obvious right to freedom of speech and expression of Article 19 of the Constitution is always, because एक आम नागरिक को, एक आम सिटीजन को ये राइट्स देता है कि आपको बोलने की लिबर्टी है, राइट? चलो जी, नेक्स्ट ये इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 370 के ऊपर, क्योंकि इसमें एक टेम्पररी प्रोविजन था and that was a special privilege that were temporary that cannot be conferred rights, and Article 40 which guaranteed equality. So state cannot discriminate on the basis of caste, creed, gender and sex. और अगेंस्ट में इसमें क्या आर्टिकल 370 के, जिसमें अभी आप बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मैंने बताई होंगी प्रीवियस सेशन में, आप प्रथम टेस्ट प्रेप की यूट्यूब चैनल पे जाके आप इन सारे सेशंस को देख सकते हैं कि मैंने उसमें बहुत डिटेल मैनर में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है कि वाई देयर वाज एन इशू इज गोइंग ऑन अबाउट आर्टिकल 370. एंड हियर इज क्विक टिप्स, और आज की क्विक टिप्स में है आपके पास बापू का हाथ. माय फ्रेंड्स, इसमें क्या है, किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया हु प्रैक्टिस बुद्धिज्म, और इसमें देखो BAPU का हाथ. बी स्टैंड फॉर बिम्बिसार, फिर अशोका, फिर प्रसन्नजीत एंड उदयसेन एंड कनिष्का एंड हर्षवर्धन. सी है हमारे एंशिएंट इंडिया किंग जिन्होंने की प्रैक्टिस बुद्धिज्म. उसके बाद यहाँ पे साब है, और साब क्या है, स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान. दिस बेटर वे टू गुड कमांड ओवर द मैप. बेस्ट वे ये है कि मैप को आप अच्छे से कमांड करें जो इंडियन मैप है. बट अगर आप नहीं कर पाते, इन दैट केस आप निमोनिक्स विल हेल्प यू आउट. एंड ये जो मेरे कुछ सेल्फ नोट्स हैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बना सकते हैं इसे. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे देखो एक आर्टिकल से विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, दिस माइंड मैप्स इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर एब्रोगेशंस. उसके बाद आर्टिकल 15 जो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है. आर्टिकल 340 से 351 जो है आपका अबाउट हिंदी लैंग्वेज के ऊपर है. आर्टिकल 24 जो है चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स दैट कैन नॉट वर्क इन अ हैजर्डियस इंडस्ट्री. और जो ये जो आर्टिकल है आपकी इमरजेंसी के ऊपर है. 52 आपका नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी, एंड ये हमारा 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो आप इस टाइप से अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? चलो जी, अब नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे. और आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा ग्रीन वॉशिंग के ऊपर. अभी जस्ट मैंने आपको आर्टिकल्स बताए. सो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली ए ऑप्शन है, और ये है आपका ओनली वन. ग्रीन वॉशिंग एजेंसी आर इम्यून टू ग्रीन वॉशिंग एक्यूजिशन, फॉल्स प्रेजेंटेशन करना. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखते हैं. द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज प्रिसाइडेड ओवर दादा भाई नौरोजी. तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट जो है माय फ्रेंड्स गलत है, बिकॉज ये WC बैनर्जी ने किया था. ये बैनर्जी साहब ने इसको फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था उन्होंने प्रिसाइड किया था. एंड द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस एन ओपन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज कादम्बिनी गांगुली, और ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी. और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. तो ओनली फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट वन. Following group of planets that are considered as gas giants in our solar system, तो it's obvious B option है यहाँ पे, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. After liberalization, India has undergone a structural change in its economy. In this context, which are the following statement best describe structural change? और C option इसका करेक्ट है.
Structural change का मतलब होता है that represents the fundamental changes that occurring in the basic features of the economy over a long period. And development is described as growth plus structural changes. Structural changes constitute to the most important parts of development. And here we are, last one. Following are included calculation of national income in India. तो obvious third one जो है आपका वो सही है, salary of employee. Only third is incorrect. National income defines the total monetary value of all goods and services produced within the country during a given period of time. Gains on sale of land that will not include in the estimation of national income. Capital gains will not be included in the national income as they do not add to current flow of goods and service in the economy. So my friend, this is all about the session. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. And आपको इस session कैसे please हमें ज़रूर बताएं. And one more thing is that please share this beautiful session to your friends and family because they must aware what is happening around us. And being a law-abiding citizen, it's your responsibility. It's be a responsible citizen. Make aware about what is happening. Not only this is not only will help you out is to knowing the facts for the students, but it will also help you out to a part of conversation. You can ask and you can find it out. So this is the session, my dear students, and we'll meet you tomorrow for the same. Till then, bye bye and take care. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow. Bye bye and take care.